Wi-Fi is not good. Bole Baba Ki Jai. I'm attempting to live stream the fire ceremony of Dr. Arvind Lal, the president of Samaj in India. His Monday fire ceremony here in New Delhi, India. So we'll see how we do. Bole Baba Ki Jai. Ashi, you place yourself between General Sahab and Ramloti. Always. No. Yeah, sit like this. Everybody will manage. Not a problem. In Baba's day, how many people? We would put 50 people around here in Baba's day. Rajiv bhai now. Okay. Okay. Diwali, how are you? So folks, without much ado, let me first welcome our oldest Bhagat from America, Ram Loti, the president of the American Samaj. She's been forward, now she says that she wants to retire, but nobody's letting her retire. And she's looking after the ashram single-handedly, Baka Ashram. And we'll talk where it is later. With her is Kashi Vishwanath and Rajiv Krishnan. And Rajiv, on your right is Dr. Gaba. On Dr. Gaba's right is Neelam Gupta, and then Anuradha Anita Bhattacharya. That's what happens in old days. And Sandeep Tandon, Urvashi Puri, and that is Charu, and that is Lalit, and Rajiv Sabarwal, and General Amit Sareen, Indian Army, on one in the thing. He was in charge, the DG of the Ordnance Corps. A 3-star general. That you would understand. Do you want to sit here, sweetie? And the lady who just put the tikas on everybody is Dipali. Anita's name I always have a problem. Like what is Anuradha? हाँ जी क्या करना है? इतना मुश्किल नहीं है मेरा नाम. नहीं मनु तो सिना तो सुनता है. मैं कभी I cannot call you Arvind. I can only call you Bibi. चलिए जी. Okay, so we have to now start. So please. ओम विष्णु 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 श्रीमद् भक्त विष्णु महापुरुष से आज्ञा तुमरा से अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरादि सुश्वेत वराह कल्पे वेवसुत मनवंतरे अष्टविष्टमे कलियुगे कल्पतम चंद्रे भारतवर्षे जम्बू द्वीपे राम क्षेत्रे पराशमाशमे दंताकंदेशे श्री गोदावरिया पश्चिम दिग्भावे श्री लवानवदे उत्तर तटे अस्मिन् वर्तमान वसंत ऋतु फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे सर्वेषु गृहेषु यथासाध्यतेषु एवं गुण विशेषनिष्ठायां पुण्यतिथौ अहम मम आत्मन श्रुति स्मृति पुण्योतक फल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्य विदर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या सिर रक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे च सर्वत्र येषु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम ई जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तपक्षमार्थम मम सुभार्य सुभाद्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य स यशो समझ भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य मन दाते सकाशात ये केचित विरुद्ध चतुष्ठाम द्वादस्थान स्थित क्रूर गृह ते सुचितम सुचित मन स यत् सर्वारिष्ट तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित वस्तु प्राप्त्यर्थम पुत्र पुत्रादि संतति अविच्छिन्न विद्यर्थे आदित्य आदि नवग्रह देवता अनुकूलता सिद्ध्यर्थे इंद्र आदि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक विविध दोष शांति पूर्वक धर्म काम मोक्ष सुख प्राप्त्यर्थम श्री जगदम्बा प्रियर्थम यथा मिलताई च द्रव्य श्री साम सदा शिव पूजन पूर्वक व्यक्त करिष्य. ओम श्री साम सदा शिव. ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवराय च ओम हर हर काशी विश्वनाथ गंगे हर हर अमरनाथ गंगे हर हर बात ओम प्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवदनान मृत्युर्मुक्षमावताम
ओम श्री भैरवाय नमः शुद्ध दक्षिणानं समर्पयामि शुद्ध दक्षिणानं ओम श्री हंग हनुमते नमः शुद्ध दक्षिणानं ओम श्री ओम श्री साम सदा शिवाय सद्गुरुवे नमः प्रस्थानं समर्पयामि ओम श्री भैरवाय नमः प्रस्थानं समर्पयामि ओम श्री हंग हनुमते नमः प्रस्थानं ओम श्री साम सदा शिवाय सद्गुरुवे नमः दधि स्नानं समर्पयामि ओम श्री भैरवाय नमः दधि स्नानं समर्पयामि ओम श्री हंग हनुमते नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री साम सदा शिवाय ओम श्री भैरवाय नमः समर्पयामि ओम श्री हंग हनुमते नमः मधु ओम मधु ओम श्री साम सदा शिवाय सद्गुरु ओम श्री भैरवाय नमः ओम श्री हंग हनुमते नमः ओम श्री भैरव ओम श्री साम सदा शिवाय सद्गुरुवे नमः शब्दास्तानं समर्पयामि ओम श्री भैरवाय नमः शब्दास्तानं ओम श्री हंग हनुमते पंजाब ओम ओम श्री गणेश ओम श्री भैरवाय नमः ओम श्री हंग हनुमते नमः हंग नहीं वाटर अभी नीचे थोड़ी देर बची ओम श्री गणेशाय नमः गंधम समर्पयामि गंधद्वारं करालशम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव ओम श्री साम सदा शिवाय सद्गुरु नमः गंधम समर्पयामि गंधद्वारं करालशम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव ओम श्री भैरवाय नमः गंधम समर्पयामि गंधद्वारं करालशम् ईश्वरीं सर्वभूतानां
Om Sam Om Shri Ganeshaya. Chandanam Samar. Om Shri Ganeshaya. Om Om Shri Bhairavaya Namah. Chandanam Samarpayami. Om Shri Bhairavaya Namah. Kumkumam Samarpayami. Om Shri Bhairavaya Namah. Om Hang Hari Chandanam Samarpayami. Om Shri Hang Hari. Om Shri Om Shri Om Om Shri Ganeshaya Namah. Pushpamalam Samar. Om Shri Sam Sadashivaya Sat. Pushpamalam Samar. Om Shri Bhairavaya Namah. Om Shri Hang Hanmate Namah. Pushpamalam Samar. Om Pushpamalam. Om Shri Ram. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Bhairavaya Namah. Bill. So Ramluni, we're going to start now. It's been going on the whole time. Okay, fine. I Om just- Agni Suchkite Nama Vadam Agni Nama Vadaman Bhakti Mahavyami Sthavyami Pujyami Gandha Pushpani Samarpyami. यानी आपको नहीं करना है अभी So, folks, we welcome you all once again. You have to use your right hand and please do not use the second finger. The first, third and the fourth finger. Take little bit of the samagri. Make sure it goes right into the fire, doesn't fall outside, and you must say Swaha. Swaha is the goddess of fire. And that is why, because all the mantras which we chant in honor of all the gods will not reach them unless we say Swaha. Bole Baba ki Yay! ओम गणनात्वा गणपतिगम हवा में हे प्रिय नात्वा प्रियपतिगम हवा में हे निधि नात्वा निधि पतिगम हवा में हे वसो मम अहम जानी गर्भम श्रीमन महागणाधिपते नमः ओम गण गणपते नमः ओम अक्तुंडाय ओम फट स्वाहा ओम गणनात्वा गणपतिगम हवा में हे प्रिय नात्वा प्रियपतिगम हवा में हे निधि नात्वा निधि पतिगम हवा में हे वसो मम अहम जानी गर्भम श्रीमन महागणाधिपते नमः ओम गण गणपते नमः ओम अक्तुंडाय ओम फट स्वाहा ओम गणनात्वा गणपतिगम हवा में हे प्रिय नात्वा प्रियपतिगम हवा में हे निधि नात्वा निधि पतिगम हवा में हे वसो मम अहम जानी गर्भम श्रीमन महागणाधिपते नमः ओम गण गणपते नमः ओम अक्तुंडाय ओम फट स्वाहा ओम ब्रह्म ज्ञान प्रथम पुस्तक विस्मृत सुचुभेन हावसु बुंद्या उपमा अस विचा सतसस यूनिमसस विप स्वाहा ओम इदं विचक्षणे तेता निधे पदम समुद्वसुपासुरे स्वाहा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिव शिवतराय च नमः स्वाहा So I forgot to say in the beginning that in the Indian, hierarchy of gods, the Divine Mother is the senior most. And below her are three gods answerable to her, three verticals. Brahma, Vishnu and Mahesh. Brahma is the creator, Vishnu is the maintainer or whatever, and Lord Shiva is the destroyer of evil.
And then all the other thousands of Indian gods are either, related to each four of them. And for the Divine Mother, basically she has three forms: Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati. And in places in India where you go, even outside India you go, the local people have named their devis or their with their local names. Kali Mata in Calcutta and Vaishno Devi in near Katra. So we are going to have going to be a mixture of Shiva mantras, lot of Devi mantras, and then we will also invoke the blessings of the other gods. Om Namah Shambhavaaya Cha Mayo Bhavaya Cha Namah Shankaraaya Cha Maskaraaya Cha Namah Shiv Shivtaraya Cha Namah Om Triyambakam Yajamhe Sugandim Pushti Vardhanam Urvarukme Vandana Nitya Bhavata Swaha Om Triyambakam Yajamhe Sugandim Pati Vedanam Urvarukme Vandana Nitya Bhavata Swaha Om Namo Bhagavate Mahamunindraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahamunindraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahamunindraya Swaha. So now the mantras are of Babaji, but of his earlier form. And the earlier form was, between 1830 or 40 till 1922. And he looked something like this. He used to wear a cap which used to cover his ears, and he used to be known as Kan Chupi Topi Wale Baba, a topi which covers his ears. So his mantras now, all written by Mahendra Maharaj. Om Kailash Girve Ramendem Santam Suchantivi Tamarim Sattam Madhe Sadak Rupanam Swaha Om Yas Smaran Matrin Siddho Bhavati Sad Sadgurum Tamhan Dev Hirakan Vasinam Swaha Om Yas Kripa Katakshira Dhanyo Bhavati Mani Das Padrikar Pramami Nirantram Swaha Om Komram Hidyam Yas Komram Yas Vashtam Dandopi Komram Yas Kumlangamam Mamiham Swaha Om Dreshim Diyamai Vidya Pasiti Charachara लोकोपकार निरतो राजशाद विवर्जित स्वाहा ओम सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यान गम्य सदाशिव सत्यम परम चिदानंदन सस्परामी ही सर्वदा स्वाहा ओम हरिरेव हरे भक्तो हरे ध्यान परायणे हरे नारमामितम पीतो हरे धाम परम चित स्वाहा ओम यो ददाचि बालिनाम सत्यानाम सुदुर्लभम सब धनोपि तुम्हें कुलंबनम स्वाहा ओम महामार्तंड रूपेण बोध भांति विनाशक सर्वभूतात्मक महेंद्र Om Namo Bhagavate Mahamunindraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahamunindraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahamunindraya Swaha. Now the mantras will come of the Divine Mother in the form of Mahalakshmi. So imagine Mahalakshmi wearing a red clothes and standing on a lotus flower. Is standing right here and giving us a blessing. And in case you have forgotten what she looks like, it's like this. Om Shri Bim Klim Ain Kamalvasanyai Namah Swaha. Om Shri Bim Klim Ain Kamalvasanyai Namah Swaha. Om Shri Bim Klim Ain Kamalvasanyai Namah Swaha. Shri Suktam. Om Hiran Varanam Haranim Suban Radhistram Chandram Hiranmaim Lakshmi Jatvedum Ava Swaha. Om Tam Ava Jatvedum Lakshmi Manpagamni Yasya Rinjam Rinjam Gamsham Pushanaham Swaha. Om Ashpuram Rad Madhyam Hastinabad Prabodhinim Shiv Devi Mupurve Shimad Devi Justam Swaha. Om Kansos Pitam Hiranukar Madam Jarantim Taptap Sarviyantim Padmastam Padmranam Tamyo Paviyashiyam Swaha. Om Chandram Prabhasam Yashasam Jalantim Shiyam Loke Dev Chutam Udaram Tam Padam Namin Shan Prabhate Alakshmi Me Nishtam Travine Swaha. Om Aditya Vanit Vanit Tasya Barani Tapsa Nudu Ya Antara Yasha Brahmya Alakshmi Swaha. Om Petu Mam Jese Kiki Pancha Radhu Tukoshmi Rashim Tatu Me Swaha. Om Shruti Pasam Balam Jeshtam Lakshmi Nasham Bhuti Mas Buddhi Sarva Nirun Vigriha Swaha. Om Gandhadvaram Duradasham Nityapushtam Krishti Ishwari Sir Bhutanam Tamyo Pavishim Swaha. Om Manasya Kamama Bhutim Vacha Satyam Shimai Pashunam Rupam Manasya Mai Shishara Yasha Swaha. Om Kardmin Paja Bhuta Mai Sambhav Kardam Shim Vasmi Kule Matram Padam Amalnim Swaha.
ओम आभा जगति सिंहानि चिक्लित वस में गृहा नीचा देवी मातरम श्रीवास में कुले स्वाहा। ओम मातराम पुष्करणी पुष्टिम पिगिलाम पदम ममालिम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदम आव स्वाहा। ओम मातराम ये कर्णीम यष्टिम सुवर्णा हेमा मालिम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदम आव स्वाहा। ताम आव जात लक्ष्मी बलपगामी यस्य हिरण्यम भूतम गावो दास्यो शनिवतिम भूषान हम स्वाहा। ओम यह शुचि प्रतो भूता जूजा जन्महम श्री पंचदशम श्रीकाम सत्यम जपेत स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम ऐं कमलसेन्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम ऐं कमलसेन्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलसेन्याय नमः स्वाहा। So the most important mantra of the Devi and whom we remember most in the form of the Devi who is sitting on top of a tiger and giving us Ashirvad, having 8 arms, etc. And it is known as the Navan mantra, 9-lettered mantra or 9-worded mantra. Aing, Hring, Kling, Chamundai, Viche. So Aing, Hring and Kling are the 3 beej mantras or the seed mantras. Aing Rupi Srishti Rachane Wali, the one who has created the universe. Hring Rupi Pratipalika, aapka paran poshan karne wali, who looks after you. And Kling Rupi is in the form of, you know, the goddess who gets your work done. Somebody has, you know, lost some money in some deal. Somebody's money has been taken away by his partner whom he trusted. Somebody is not getting, you know, leave from his boss. All those kind of things. So then we remember her in the Kling Roop. So Aing, Hring, Kling, Chamundai, Viche. Chand, Mund, they were 2 demons. Unka Chamundai, the killer of these 2 demons, Chand and Mund. Yahi Kari Vardayani who gives you boons, and Viche means who gives you, makes you, you know, fearless, who makes you fearless. So Aing, Hring, Kling, Chamundai, Viche is the Navan mantra which you should never forget. And especially during Navaratras, you must keep on doing it. And then we will take out these beej mantras, Aing, Hring and Kling, and we will again do them. So there's plenty of Devi's mantras to come. Aing, Hring, Kling, Chamundai, Viche, Swaha. Aing, Hring, Kling, Chamundai, Viche, Swaha. Aing, Hring, Kling, Chamundai, Viche, Swaha. Ratri Sushi. Om Vishweshwarim Jagdhati Sisi Siharkarni. Nidrang Bhavatim Vesham Telam Tiji Prabhu Swaha. Aing, Hring, Kling, Chamundai, Viche, Swaha. Brahmavach. Om Tom Swaha, Tom Sadha, Tom Hi Vashka Suratmika. Sudha Tarvakshi Niti Tita Matratmika Sita Swaha. ओम अर्थ मातृता नित्य यानुचार्य विशेषत तमेव संध्या सावृतितम देवी जननी परा स्वाहा। ओम त्वयि धारते विषम तैत जगत तत्पालते वी तम तसंते च सर्वदा स्वाहा। ओम विशिष्ट सिद्ध रूपा तत् रूपा च पालने तथा सिद्ध रूपांत जगद्वे जन्मे स्वाहा। ओम महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह च भक्ति महादेवी महासुरी स्वाहा। ओम प्रकृति त्वं सबसे गुणते प्रभावनी काल रात्रि महारात्रि रात्रि दारुणा स्वाहा। ओम तम शीतवीश्वर हिस्तम बुद्धि बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिता तुष्टितम शांति शांति रेव च स्वाहा। ओम खड़गनी चूर्णी गुरा गंध चक्री तथा शंकरी चापनी बाण भुषंती परिघायुधा स्वाहा। ओम सौम्य सौम्य तरसे सौम्य भरतवती सुंदरी परा परा नाम परमात्मा में परमेश्वरी स्वाहा। ओम यच किंचित परिदस्य सदा कलात्मिके सर्वस्या शक्ति सातम किम सुस्य सदा स्वाहा। ओम यया त्वया जगदिष्टा जगपाति यो जगत सोपि निद्रवशम नीत तस्य तुति महेश्वर स्वाहा। ओम विष्णु श्री ग्रहण महिषान एव च कारितासे यतो त्वस्ताम कशक्तिमान भवेत् स्वाहा। ओ स्वातमितम प्रभावित सौर देवी संतो मृत द्रादशा वधु मधु कैटभो स्वाहा। ओ प्रबोधम तदक्षामिन यचलमु बोधश्च कृतमतु हंत मेतु महासुरो स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। So the Devi mantras will continue, and now this time we will remember the Devi in the form of Haidakhandi Ma, and also in the form of Mahakali. Om Hrim Shim Haidakhandi Namah Swaha. Om Hrim Shim Haidakhandi Namah Swaha. Om Hrim Shim Haidakhandi Namah Swaha. Om Shri Siddheshwar Shri Charnashit Shri Munit Mahim Devanam Kalpunjatam Samarpar Pratimidam Swaha.
ओम हेड़ाखंड बिहारी सद्धाराम जगत पावनी तम्बे नाम सुधा सुधा समता वशसी धन्य श्रीचरण तस्य भक्तस्य लोक तृप्ति व्रत चातुर वर्णित दान रसिको पुण्य महेंद्रादिते स्वाहा ओम चैतन्य अमृत संसनी भद्रम भक्ति सिद्धम वस्तम निज निज निधि दाम सिद्धि कृपा विष्णु ये ध्यानति हृदि स्थितम तब विभु रूपम परम भास्वरम ते विदंति शिवम शिवस शरणम सर्वदाम शामकाम स्वाहा ओम तम नित्यवे सरसाम निचात के वर्ष तापत्वनी ममृतोक धाराम संसार धर्म शन होग्रम तरण करोषि सति भवभीति हारम स्वाहा ओम शुवंतु शांत बुद्धेन तृप्ता सशाद दीना भवभीति पांथा पदाम जो श्री चरना शतस्य गंभीर संसार महाविभूतम स्वाहा ओम समश्रिन ये दश निश्चयन ते निर्भय विद समस्त चिंता संसार यातव मनुवर्तियंतु भावन्ते पारबन्नु प्रपन्ना स्वाहा ओम कोन्यो दयालु शनाथनाथ कोस्ति लोके सबल सनाथ देवतारो दलितात बंधु यादक शरुषि महेंद्र नाथ स्वाहा ओम श्री मन महेंद्र मराचित पाद पद्म श्री सद्गुरन पद्म सुकेन भेंग चंद्रम दयामय सुधानि मंत्र नोतम संसदनाथन नतोस्मि स्वाहा ओम नतोस्मि तेनाथ पदार बिंदम भक्ताति हम भक्ति सुधा सुमत्रम सुराच्युतम जय जुष्टम सिराचार्य वैरी रूपास्यम स्वाहा ओम चनाशितस चंडाम रेणु भक्तिम चनाशितस पचपंक दास्यम भगपयत शिव हेड़ाखान वासिन यदिते कृपा कनस भवामी पात्रम स्वाहा ओम शिवतो हेड़िया खंडे शिव चनाशित आशिता रक्षता शशत श्रीमन विचराधन स्वाहा ओम श्री मन मुनीन दैतम दैतम महेंद्रम श्री चरण पंकज दिव्य भृंगम प्रेमना प्रडम गतता शशस्प माला रताडी हृदम सलम क्रोधु स्वाहा ओम अंबा आनंद रूपा च आत्मा लाद दायनी अपार करना भवाम परमभाम नितम नमामि हम स्वाहा ओम श्री मन मुनि पद पदम पराग राग लुब्धत भगदत वदत मंत्रालम संसार तारम मराचित पाद पद्मम श्री मन महेंद्र मुनिपुंग मान तोस्मी स्वाहा ओम यस कृपा विक्ष लेशतोपि वाणी स्वयं धावती नित्यति विद्या समस्ता यमुन भजन्ति तस्मै नमः श्री चरणाश्रिताय स्वाहा ओम सुरा योगीश्वरा सिद्धा सर्व मंगलकांक्षण श्रीमंती नाम हृदय कामिकाम स्वाहा ओम हेड़ाखंडेश्वरी देवी सद्गुरु हृदयसता अभिषिद्धा दुर्गा सब देव नमस्कृता स्वाहा ओम हेड़ाखंड बुधासनम परमेश्वर गुरुम शिवम नतो देवगणा सर्वे उदितांबिकाम स्वाहा ओम उच्च देवगणा सर्वे जस जगदम्बिके प्रसीद परमेशानी प्रेत सुख संपद स्वाहा ओम हेड़िया खंडे शिव त्वमसी श्रुति रुता शक्ति रुग्रा कराला भक्त नाम व्याधि मादी प्रश्न शिवति वेद मंद हासम मोह ध्वांते मध्य हृदय वस रितम भासुरा ज्ञान मूर्ति भक्तिम देहेश्वरी तम निज पद कमले भावपूर्णा मनोज्ञान स्वाहा ओम योगिनाम योगमाया त्वमसी धनताम श्री स्वयं विश्वभंति हंत्री मोहंकारम निष्खर की ज्ञाना शारदा त्वम महेंद्री तम मनोज्ञा निजन जयदा शक्ति रौदतमेव हिड़ाखंडेश्वरी तम शक्ति देवी माता प्रसीद स्वाहा ओम शक्ति ही श्री वैष्णवी तम विधि हरवी संस्कृति विश्वधात्री सावित्री वेद माता तपन तुर्भा विश्व विद्या विभासी काली तम शत्रु सैन्यम कबल संग्रम छिंद शस्त्र बहारे दीनम माम रक्ष नितम तब चरतम दासदसम तदियाम स्वाहा ओम महेंद्री तम सुरनाम सकल भैरी सिद्धि दाती नारायणाम भक्तानाम भीति हंत्री मणि मुकुटधरा वाणी त्रम कृपाली अंबे ध्यानती ये त्वाम तम जपरा शुद्ध भावेन पूर्णा तेषाम रक्षापरा तम विचरसी भुवने सर्व मंगलदायत्री स्वाहा ओम दुर्गे विश्वाति हंत्री जय जय त्वरितम शत्रुसैन्यम मध्यम पीत्वा पीत्वा पहारम कुरु कुरु दत्तम छिद शूल प्रहारे भक्तानाम भीति हंत्री शर्मकम दासी दास प्रभ्रम सर्वेशा विस्त्राति द्रुजन्नी तस्मन्नाद्य स्वाहा ओम नित्य ध्यानती ये त्वाम सदर जपरा शुद्ध भावेन पूर्णा निर्द्वंद देगे चरण कमल दायुष पीष्टुक्ता पदाब्ज मनोज्ञा भव हरण संचित भक्त्या तेषाम कल्याण दाती शुभ बरफलता मातृवंशिका त्वम स्वाहा ओम ऐश्वर्य बुद्धपूर्णा त्वमसी भगवती सर्व समदात्री रक्षित्री भक्त रंजन सबल निज भक्षत पुत्रे लक्ष्मी पदमाल्या तम तमसी सुरता शारदा वेद माता त्वम काली रौद्रूपा जैसी सुरूपिन विधि हंति तमेव स्वाहा ओम शत्रुनाम सेन मुग्रम जहि जहि सवृत्ति भारे मूर्छन्ति बाण वर्षम दलदल त्वयितम पात्यन्ति त्रिशूलम त्रयी त्वम शरणम शर्मकम बालकम तावकीनम तीने हिने कृपाम तम कुरु कुरु वदे देहि ताव जास्यम स्वाहा ओम हिड़ाखंडेश्वरी तम सकल श्रुते देवी विशारति हंत्री
दीनातराम सदा त्वं भवहृन् पूर्ता मातृशक्ति त्वं गौरी सर्वदेहे पद करे ओर षोड़ भासी भाषा श्री धन भक्त नित्य भास गौरी ओम माते देंत्री हंती हर हर सतम देन दुखम मदियम शत्रुनाम मर्दनम तम कुरु कुरु रवसम तीव शूल पहारे दीनम माम रक्ष विप्रम तम तृप्तम बालकम तावकीनम लोकेशै वृद्धताम ताम सदत जपरा चंडिका महेश्रियम स्वाहा भवांड में भीति तरंग पूर्णे माता विस्माल कुलोहम माम रक्ष अम्बे जगदावलंबे प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि दुर्गे स्वाहा ओम नान्योच सिता समुद्र मध्य क्राता ऋते तम जन्नी शरण्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि पाहि त्रैश्वर तार्य तार्यंब स्वाहा ओम दयामी तम जन्नी मध्या अहम तुदोष सुतोष दीना कृपाम कुरु तम जन्नी शरण्य हृदय भक्ति मध्य तुर्याम स्वाहा ओम प्रसिद्ध राजेश्वरी राष्ट्रवर्धनी त्रिलोक संतराण परे सुरेश्वरी प्रेज भक्ति निजपात पदम्यो प्रसिद्ध मातर जगताम नमस्तुते स्वाहा ओम नमस्तु सर्वेश्वरी शांकरी शिवे जयति तम जानी शात्रुम बलम कृपा सुधा वष्टि लोक वंदिते प्रसिद्ध माता जगताम नमस्तुते स्वाहा ओम आनंद सौंदर्य स्वरूप शालिनी अनंत संसार समुद्र तारणी मुनि हितपदम गुहा विहारणी नमस्तु दुर्गे दुर्ता पहाड़नी स्वाहा ओम आनंद रूपाम चित्ति शक्ति दीप्ताम विद्याम पराम ब्रह्म सानुभूतिम कर्णपूर्णा गुरुमूर्ति रूपाम देवीम नमामि जगदीश्वरीम त्वाम स्वाहा ओम माम रक्ष नित्यम जगदावलंबे त्वमेव सत्यम जगजीवनी मता संसार जन जन रोग वैद्या माधम भजे हिड़ाखान वासिनीम स्वाहा ओम ह्रीं श्री हिड़ाखंडेश्वरी नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री हिड़ाखंडेश्वरी स्वाहा ओम ह्रीं श्री हिड़ाखंडेश्वरी नमः स्वाहा ओम श्री साम सदा शिवाय महारुद्राय नमः स्वाहा हाँ जी Rajiv, now the mantras will be of Lord Shiva, and this is the most powerful mantra of Lord Shiva, known as Mahamritanjay mantra, and this has the capability or potential of raising a man back to life after he's been pronounced dead, provided it is the mantra is chanted by somebody who has charge the battery of the mantra. So that is very important. It's going to be a long mantra, so please have patience. It will be done 16 times. And this is basically for our longevity and good health. Bole Baba ki. Om Ram Jumsa, Om Bhurvava Swaha, Om Kriyambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam, Urvarukme Vandanan Mrityur Mokshamavat Swaha, Bhuvabu, Om Sa Jum Ram Om Swaha. ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः ओम स जूं ह्रां ओम स्वाहा ओम राम जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक में वंदना मृत्युर्मोक्षमामता स्वः भुव भु ओम स जुह्रम ओम स्वाहा ओम ह्राम जुम स ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदना मृत्युर्मोक्षमामता स्वः भुव भु ओम स जुह्रम ओम स्वाहा ओम ह्राम जुम स ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदना मृत्युर्मोक्षमामता स्वः भुव भु ओम स जुह्रम ओम स्वाहा ओम ह्राम जुम स ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदना मृत्युर्मोक्षमामता स्वः भुव भु ओम स जुह्रम ओम स्वाहा ओम ह्राम जुम स ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदना मृत्युर्मोक्षमामता स्वः भुव भु ओम स जुह्रम ओम स्वाहा ओम ह्राम जुम स ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदना मृत्युर्मोक्षमामता स्वः भुव भु ओम स जुह्रम ओम स्वाहा ओम ह्राम जुम स ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक में वंदना मृत्युर्मोक्षमामता स्वः भुव भु ओम स जुह्रम ओम स्वाहा ओम श्री शाम सदा शिवाय महारुद्राय नमः। हाँ जी, काशी विश्वनाथ बाबू, अब भैरव जी के मंत्र आ रहे हैं। So the Nagari of Kashi Vishwanath, which is now known in modern terms as Banaras or Varanasi, belongs to this gentleman, Bhairav Ji. And therefore, Bhairav Ji, it is said that if you want to get liberation in life, one should classically, if you can manage it, die there. So we know many people at the end part of their life, they say, हमें काशी विश्वनाथ ले चलो, हम वहीं पे जाना चाहते हैं. Anyway. So the main thing is that in the hierarchy of gods, Lord Bhairav is a notch higher in power than Lord Hanuman. What Hanuman was to Lord Ram is Lord Bhairav to Lord Shiv. And when goddesses were sent from heavens to this earth like Gangama, he was told to accompany her for her protection. So the Devi, who gives protection to everybody, for her own protection, Bhairav Ji was sent. He is, his day of, actually praying to him is a Sunday, just like Jesus Christ. And he is one of the Hindu gods who is also a non-vegetarian and non-teetotaler. And his Vahan, the place where he, Savari, where he sits, is a black dog. And he is, the controller of all the souls in this world, and especially the ones who go astray. You must have heard ghosts and this, and some spirit has got attached herself or himself to somebody. So he is the controller of all the Bhatakti Atmas, of all these souls. And therefore it is not, funny, or it's not, one of the favorite places where you can find him is a cremation ground. Because that is the port of embarkation from this life to the next life. That is where things happen. Bole Baba ki jai. So we remember Lord Bhairav now. And quite correctly, Shastri Ji has, this is Haidakhandi Ma, and in the end, it is the Bhairav Stottra which has been written. So it is, now you can understand why these things happen. चलिए. ओम कर कलित कपाल कुंडी दंड पाणी तनु तिम नील व्यालो यज्ञ भविति कृतु समय सर्पया विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साध का नाम स्वाहा. ओम भैरवो भूतादश्च भूतात्मा भूत भावना क्षेत्र के क्षेत्र परच क्षत्रिय शक्ति विराट स्वाहा. ओम शमशान वासी मांसाशी घर प्राशित पांतुकृत रक्तप पानप सिद्ध 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 सेवित स्वाहा. ओम कंकाल काल शरण कलाकार सुतनु कवि तिरुज भव नित्यता पिंगल लोचन स्वाहा. ओम शूल पाणी खड़ पाणी कंकारी धूम लोचन अभिरु भैरवनाथ भूतो योगिनीपति स्वाहा. ओम धन दो धन हारि धनवान पति भानवान नागारो नागपाशो विमुकेश कपालकृत स्वाहा.
ओम काल कपाल नीच कमनी कला निधि तिरुच जल ने सी शिगी रूप स्वाहा स्वाहा ओम तिने दिन शांत शांत जल दिए बंको भविष्य कृपार मुदारक स्वाहा ओम भूता दक्षः पशुपति वृक्षको परिचारक दूत दिगंबर सुरन हणि पांडलोचन स्वाहा ओम प्रशांत शांतद सिद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति दिनेश ज्ञान शक्ति सुपोमय स्वाहा ओम ओम अष्टाधार षडाधार सप्त शिगिजग भूत्र पूराधीश भूति भूतराज स्वाहा स्वाहा ओम कंकालधारी मुंडी चिन्नाग यज्ञ प्रविद्वान जिमड़ो मोहन सभी मारु शोभन तथा स्वाहा स्वाहा ओम सुद्रांजन प्रख्यो दैत्य मुंड भुजत बलि भुंग नादो बालो बाल स्वाहा ओम सर्वाप्रणो दुर्गो दुष्पुत निषेधत कामी कनानिधि काम कामनी वश वशी स्वाहा ओम जगदीक्षकर नंदो मया मंत्रो धीमय सर्व सिद्धि पदो बद्धः प्रभु इति वही स्वाहा ओम अशोक रत्न नाना भैरस महात्मना मयादि कृतिम देवी रहस्य सर्व कामदाम स्वाहा ओम ये इदम पठे श्रोत नमः शतमतम नतः दुर्तम किंचन च भूत भयम तथा स्वाहा ओम नाचा मरिवम दस ग्रह राजभयम तथा ना शत्रु भयम किंच पवनम पजित स्वाहा ओम पाद का नाम भयम नैव व्यम पठे श्रोत मुतम सब धीम रॉब्द नमः शक्तिना स्वाहा ओम बम बटुकाए आप धारणाएं गुरु बटुकाए बम ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम बम बटुकाए आप धारणाएं गुरु बटुकाए बम ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम बम बटुकाए आप धारणाएं गुरु बटुकाए बम ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम जी मेरा खंडेश्वरी नमः स्वाहा जी मेरा खंडेश्वरी नमः स्वाहा जी मेरा खंडेश्वरी नमः स्वाहा So Rajiv, now the mantras which will come will be of the other gods, and you know there are plenty of gods in India. So gods like Ramchandra ji, Lakshman ji, Hanuman ji, Lord Krishna, Radha ji, Dattatreya, etc., etc. So what I could only gather from Babaji was that even when God has come in human form as an avatar, then he is governed by the same kind of pulls and pressures, the Kal, which governs you and me. For example, Lord Ram was to be coronated the next day, and he was just 3 weeks into his marriage, honeymoon phase, and he was told to get out of the kingdom, and for 14 years. And in the 14th year, Ravan came, kidnapped his wife Sita, and had it not been for Hanumanji, he would have definitely lost his brother Lakshman. He would have probably never seen Sita's face, and maybe would have been, still meandering somewhere in the jungles there. So it is said that when Sita Mata got kidnapped, Ramchandra ji went berserk. Like a madman, he was asking the trees, the leaves, the flowers, and everything, "Hi, have you seen my Sita?" And it was really impossible. So that Kal, that time which has not left gods, is not going to leave you and me. And 3,000 years later, the most handsome God ever, who has come on this human form, Lord Krishna, he appeared. He knew he's God, but could he separate his two nephews or from fighting with each other? Mahabharata, he could not. So again, the question is that when this question was asked to Babaji, that what do? We are not even gods. Nowhere near them. So he said very straightforward. He says you do your karma yoga, which is your duty, what you have to do, which all Indians who have read Gita, they understand. Do your karma. But the second yoga thing which he said was do your jap yoga. That is constant chanting of the God's name. Babaji emphasized that please do not leave the religion or the God you believe in. But since he was a Shivite, so he gave us the Mahamantra Om Namah Shivaya. So that is the way it's done. Hanji.
ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा। Swaha. ओम रामम रामजन सीता भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वैचक्षण प्रमामि पुनः पुनः स्वाहा। Swaha. ओम दक्ष्मे लक्ष्मे यस वामे जनकात्मा उत्तमातरस्तम वंदे रघुनंदनम स्वाहा। Swaha. ओम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कर्ण रूपम कर्णकरंतम श्री रामचंद्र शरणम पवते स्वाहा। Swaha. ओम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी स्वाहा। Swaha. ओम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी स्वाहा। ओम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी स्वाहा। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई स्वाहा। Swaha. ओम गई बहोरी गरीब निवाजो सरल सबल साहिब राजू स्वाहा। Swaha. ओम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई स्वाहा। Swaha. हंग हनुमते नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा Hang Hanumate Namah Swaha. Now I'll be chanting 3 mantras of Lord Hanuman, but in my own mind, you just have to say Swaha. Bhat Swaha. Swaha. Bhat Swaha. Swaha. Bhat Swaha. Swaha. So a word about Lord Hanuman. When we pray to God in the morning, and every Hindu home has an altar, some room. So please put a photograph of Hanumanji also. And when once you've taken your bath, you've done your, the incense burning, etc. When you settle down, before you start doing your jap, you should do the Hanuman Chalisa part. If you are not doing any other part, if you are doing some other part, please continue doing that. But for most of us who don't do anything else, Hanuman Chalisa is a part which you should do every day. It is a Shakti kind of a part which will give you a lot of strength inside. So we are going to, always, and Hanumanji is one of the gods who was told by, his boss, Lord Ram, that till Ramayana is read on this earth, you will stay right here. So we don't know the addresses of the other gods, but Hanumanji is definitely earthbound. And proof of this can be seen from the fact that on a Tuesday or a Saturday, which are Hanumanji's days, there are very long lines even now. Till night, you are standing in a line and praying to him. So Hanuman Chalisa you must do if you are not. Om Kling Krishnai Gomda Gopjan Balabhai Swaha. Om Kling Krishnai Gomda Gopjan Balabhai Swaha. Om Kling Krishnai Gomda Gopjan Balabhai Swaha. Om Namo Narayana Swaha. Om Namo Narayana Swaha. Om Namo Narayana Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swaha. So here one thing I can for the ladies especially. So Lord Krishna is supposed to be the most handsome God ever, who's come on the earth. And ladies are very fond of, remembering him in that form, his leelas, etc., etc. But for everybody, including ladies, what you have to remember about Lord Krishna, anytime when Lord Krishna is mentioned to, then do your duty. You are duty bound because that is the only thing which he has come to teach on this earth. And if you have, look at Lord Ram, his own form 3000 years earlier, then Raghukul Riti Sada Chali Aayi, Pran Jai Par Vachan Na Jai. So what you think, you speak, and what you speak, you must do. You're promising that. So these are two things which you must remember because the stories are very long and very, engrossing. But these are the concentrates of this. Hanji.
ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। स्वाहा। ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। ओम दम दत्तात्रेयाय नमः स्वाहा। ओम दम दत्तात्रेयाय नमः स्वाहा। ओम दम दत्तात्रेयाय नमः स्वाहा। ओम गौं गुरुष्णाथाय नमः स्वाहा। ओम गौं गुरुष्णाथाय नमः स्वाहा। ओम गौं गुरुष्णाथाय नमः स्वाहा। ओम बम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम बम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम बम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम वीं विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम वीं विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम वीं विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शम शदाननाय नमः स्वाहा। ओम शम शदाननाय नमः स्वाहा। ओम शम शदाननाय नमः स्वाहा। ओम सूम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सूम सूर्याय नमः स्वाहा. Now this is for all of us who have gone to schools and colleges. Everybody has. So many times when you were young, there is a discussion, debate going on, and one chap says, "Why do you believe in God?" And other chap says, "I believe in God because I believe in God. My mom told me, or whatever." The other chap is not a guy, and he says, "Have you ever seen God?" Now, because you're a straightforward guy, you will not tell a lie. You say, "Yes, I have seen his photographs, I have seen his statues, but I have not seen God." But from today onwards, you will say, "I believe in God because I have seen God." And which God am I talking about? Surya Bhagwan, Lord Sun. If Surya Bhagwan was not there, there would be nothing on earth. No vegetation, no human beings, no animal, nothing. So now you can say that yes, I believe in God because I have seen God. And of course we'll talk about Lord Shiva. ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा. So this is another, going into our old scriptures and Vedas, and that is our gods and our sons at that time. They knew that there were 9 planets. These are mantras. All these mantras are Vedic mantras, which Babaji has actually written down. Nothing has been written by ourselves. So they knew that there were 9 planets. And Mr. Galileo, the Italian scientist, he made the telescope only in 1620. And every 1 year, 5 years, 3 years, 10 years, 50 years, they kept discovering a planet. And then said, now we've got 9 planets. So how come our people beforehand knew that there were 9 planets? So either they had telescopes earlier, or they had something here which is akin to a telescope. So Babaji told me, he says, whatever you are seeing today, don't think that did not exist earlier. So I go by the formal theory that whatever you are seeing today did exist earlier. Then science, he explained, science reaches such great heights and destroys itself and starts from square one. Bole Baba ki jai. Om Brahma Murari ho gaya na? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुराकारी भानु शशि भूमि सिद्ध बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के सर्व क्रिया शांति ग्रह भवन्तु स्वाहा. ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुराकारी भानु शशि भूमि सिद्ध बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के सर्व क्रिया शांति ग्रह भवन्तु स्वाहा. ओम रांग राहुवे नमः स्वाहा. रांग राहुवे नमः स्वाहा. रांग राहुवे नमः स्वाहा. ओम गौम गौतमी गंगाई नमः स्वाहा. ओम गौम गौतमी गंगाई नमः स्वाहा. ओम गौम गौतमी गंगाई नमः स्वाहा. Now we are going to do a very important mantra known as Gayatri mantra. So I'm not going to tell you what each word stands for, but Gayatri mantra increases your intellect. And the intellect has come to the fore so much that today the top 10 companies in the world, grossing wise, revenue wise, whatever, Forbes, first 10, are all either IT or IT related. And what is this new IT thing? When Ram Roti and I were in school and college, we had not even heard of IT. Computers came first time. I remember when I was growing up in IIT Kanpur, first time. So this is something which, because of the brain power, they have a screen in front of them, and they have a keyboard in front of them, and below there is a bucket in which Las Vegas and money keeps on dropping. And what is the power? The power is of the brain. To increase your power, please do the Gayatri mantra, which we are going to do now. It's a slow mantra and a long mantra.
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् So after the Havan, I will narrate to you the story which Ram Loti told me of how TCS guys got posted to Denver and what happened later on. We'll talk about it later. Om Eem Isa Masih Devaya Namah Swaha. Om Eem Isa Masih Devaya Namah Swaha. Om Eem Isa Masih Devaya Namah Swaha. So now it is widely acknowledged, and many books have been written, many times it's been written, that Lord Jesus Christ, he lived in India for a considerable amount of time. I myself have read that he and Lord Shiv, they stayed together for 3 years in Kashmir. And Lord Jesus Christ, before he finally went back to Jerusalem, he was inducted into the under Lord Shiva's ages, I would say, in the Nath brothers, Gorakshnath. And these Gorakshnath used to have their ears pierced at that time. And his name was supposed to be Isa Nath. So this has come out in many books, and therefore the Muslims are not very wrong when they say destroy the Hindus and the Christians together. So they knew this old connection between the Christian religion and the Hindu religion. भोले बाबा की जय। ओम ईम ईसा मसीह देवाय नमः स्वाहा। ओम ईम ईसा मसीह देवाय नमः स्वाहा। ओम ईम ईसा मसीह देवाय नमः स्वाहा। ओम शोम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। शोम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम शोम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ईश देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ईश देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ईश देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। धीरज बिल्कुल थोड़ा सा घी और ले आना। So now we come to the Om Namah Shivaya mantra, and if you believe in Lord Shiva was the senior most of all the three gods. And if you want your life, Babaji has said it very clearly many times that that to get through all your troubles, you do your Karam Yoga and Jap Yoga. So the Jap Yoga is of Om Namah Shivaya. How it has to be done, how repeatedly done, how with great discipline and routine it has to be done, we shall discuss afterwards. So please, put your mind together and pray to Lord Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Swaha. 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 So I had mentioned to you earlier that the most important mantra of the Devi is known as the Navand mantra. Ain Hring Kling Chamundai Viche, in which there are 3 seed mantras, Bij mantras.
Aing, ring and cling. Aing रूपी सृष्टि रचाने वाली who creates who's created the universe. Ring रूपी प्रतिपालिका who looks after you and me. And cling रूपी whatever our jobs which have not been fulfilled, we want them to be fulfilled. Who doesn't want this job to be done? So then you remember the goddess in cling. So we will take out the ring mantra and we will do ring mantra now. And Devi is one god or goddess who doesn't mind if you don't put Om before that, she doesn't mind it. So it's up to you. So I'm going to say the ring mantra 7 times. Ring, 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 ring. And then we'll say Swaha. So please remember the name. Om ring 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 swaha. Om 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 ring 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 swaha. So these I have also mentioned on page 215 of my book. If you have read it, you please go and read it again, 215 page. So there I start with Om Namah Shivaya, then the second mantra is ring and third will be cling. So cling mantra to get rid of all your obstacles and speed breakers in life. Cling group. Om cling 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 swaha. Om cling 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 swaha. Om cling 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 swaha. Om 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 cling 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 Swaha. Om cling 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 swaha. And in the end we will remember, the darbar, the kingdom in which we are sitting, and that is of Lord Shiv and his consort Parvati. We remember Lord Shiv. Om Shri Mahadev Parvati Sharanam Swaha. Om Shri Mahadev Parvati Swaha. Om Shri Mahadev Parvati Sharanam 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 Swaha. So please make last 5 parts of your offerings. The first part in both your hands. ओम चत्वारी शंकातेयो अस्पाद्रे शीशे सप्त हस्तासो विदा ओम ऋषोभि रूढ़िमति महादेवो माध्यम अवेश स्वाहा. Second part, both hands. ओम प्रजापते न देवान्या विश्वनाय रूपाणी परिता भूभि व्यकामस्तु जिस्तु अस्तु वस्याम पतयो रणियाम स्वाहा. Third part, both hands. ओ पुनः दरुदित कृष्णा पुनः पद वस्ने विक्रांत वहा इस भुज सत्यो स्वाहा. Fourth part. ओम सत्य अग्नि सबदर सब जीवा सब विषय सब ध्यान प्रियाणी सब धोता सब धातुआ जति सब योनीन राष्ट्रपिता जितेन स्वाहा. Fifth part, please take in both your hands and kindly stand up. Known as Purna Ahuti.
senior citizens can take their own sweet time in getting up. Well, I'm younger, but I'm still fast. Thank God. Thank God you're out of the age. ले लो. Hold it like this with your left hand. Place the samagri on top of this. And keep it here in the center. Keep this. Hold it with your Bring right it hand. to the center. Place the samagri on top of this. Yeah. And place the coconut under the ghee. Daksha will give you. ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नाम मानिति कचप चतुर्भुज विक्रम कांपी वासरी ओम ह्रीं संगाय सुप्रभाराय सवर्ण्याय सरस्वती नाना दिशाय महाकाल्याय महालक्ष्मी महासरस्वती दश महाविद्या स्वरूपिणी श्री हिराखंडेश्वरी श्री हिराखंडेश्वराय चामृतम समर्पयामि नमः स्वाहा। बोले बाबा की जय। गुरु भगवान हरियाखंडी की जय। गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। काशी के त्रिपुरारी नाथ श्री काल भैरव की जय। जगदम्बे मात की जय। हिराखंडेश्वरी मात की जय। बजरंग बली की जय। महामुनिराज महाराज की जय। बोले बाबा की जय। That's it. That's it. Just keep it here. ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपराय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा पूजताम परमेश्वरी पूजताम परमेश्वरी पूजताम परमेश्वरी। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपराय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समनाय ओम प्राणाय स्वाहा तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा बड़े दिन हो गए इच्छा थी आज ओम हे राम बिहारी Om Jai Jagadamba
Sarvipurata Vidarini Bhavanini Tarini Maya Bhavanini Tarini Tare Taranahari Tare Taranahari Jaya Jagadamba Shive Om Jaya Jagadamba Shive Mohamadya Maraharini Vishwarudarini Maya Vishwarudarini Kota Shri Adhikari Kota Shri Adhikari Jaya Jagadamba Shive Om Jaya Jagadamba Shive Bhagavija Sancharini Divya Prakashini Maya Divya Prakashini Kundalini Sakara Kundalini Sakara Jaya Jagadamba Shive Om Jaya Jagadamba Shive Prantika Maharini Maya Prantika Maharini Mohani Marini Mohani Marini Jaya Jagadamba Shive Om Jaya Jagadamba Shive Surupa Sampati Yashadani Shreya Thani Maya Reya Thani Karpaveli Shimti Karpaveli Shimti Jaya Jagadamba Shive Om Jaya Jagadamba Shive Shri Jayanashita Tapakani Tapovalari Maya Tapovalari Riddhi Siddhi Ki Dani Riddhi Siddhi Ki Dani Jaya Jagadamba Shive Om Jaya Jagadamba Shive Harini Jagamanharini Maya Jagamanharini Dayamayi Deveshi Dayamayi Deveshi Jaya Jagadamba Shive Om Jaya Jagadamba Shive Jai काशी के त्रिपुरारी नाथ काल भैरव की जय जगदम्बे मान की जय महामुनि राज महाराज आज की जय आज आप यात्री में सगळे घर पे होला बोले बाबा बाबा की जय Thank you for joining us in this beautiful Delhi fire ceremony at Dr. Arvind Lal, where Baba Shiva did his fire ceremonies when he came to Delhi sometimes. So, Bole Baba Ki Jai.